Assalamu alaikum, dear students. I hope that every one of you would be in very good health and spirit. I'm going to teach you English Book 2, Lesson 1. First, have a look at the contents of the book. In the index, you see part 1 comprises of 10 essays starting from The Dying Sun to The Jewel of the World. And second part contains 5 heroes which belong to different strata of society. There are some historical figures and we will get to know about them. Moving on to first lesson, The Dying Sun is written by Sir James James. It is more of a scientific essay that describes how did the earth come into being. Observe the title, The Dying Sun, which suggests the sun that is disappearing. So, when you will read this essay, you will get to know what are the further suggestions that are made by the title. Let's read out. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. The first introduction to stars. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. कुछ stars ऐसे हैं जो अर्थ से थोड़े ही बड़े होंगे. Hardly, little less, थोड़े ही बड़े. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside. लेकिन उनकी जो majority है वो इतनी बड़ी है कि thousands of earths could be packed inside. उनके अंदर भरी जा सकती हैं. And still leave room to spare. और फिर भी उनमें खाली जगह बच जाती है. What is the first suggestion by the first line of this essay? Usually essay का जो style होता है उसमें generally जो first sentence होते हैं उनको हम thesis statement बोलते हैं, जिसमें writer express करता है कि उसका जो essay है what is going to be the main point. So he is making his main point through this thesis statement. He is going to write about stars. And what is the property of star that he is describing? The stars are so big. He is referring to the vastness of the universe, which encompasses the stars that are so big that even thousands of earth could be packed inside, and still there is a lot of space left that can be filled with. So he suggests that the universe is so grand. Moving on. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. Another suggestion. First he presented his topic idea and then now the writer is giving details. He's adding on to the volume of the universe. He's magnifying it. He's presenting it on a magnified scope. Millions and millions of earth. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grain of sand on all the seashores of the world. Now, अब उन stars का number क्या है? उनकी तादाद क्या है? This numbering quantity is pretty important. What does he want to suggest? Total number of stars is equal to the grains of the sands on all the beaches of the world. कितने ज़्यादा हैं? What does he want to suggest? The grandeur of the universe. कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. The last sentence of the paragraph, what is suggesting? Such is the littleness of our home. The theme of this paragraph, or maybe a compact theme of this whole essay, कि हमारा home, he's referring to earth, हमारा home इतना छोटा है when measured up against the total substance of the universe. जब हम उसको universe के total substance, जो total matter है, जो चीज़ें universe में मौजूद हैं, उसके साथ measure up करते हैं when we compare it against the world. So, you get to know the thematic concern, कि in fact आपके इस ऐसे का thematic concern क्या है? One, the grandeur of universe. Secondly, littleness of earth. फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, आपने उसका ऐसे का स्ट्रक्चर भी देखा. फर्स्ट स्टेटमेंट, द थीसिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस डिटेल्स को ऐड किया है
और इस पैराग्राफ का आखिरी जो सेंटेंस है उसमें एक मेजर थीमेटिक कंसर्न जो है राइटर ने उसको इम्पोज किया है. सो दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो कि कोई भी ऐसे का रिटन स्ट्रक्चर किस तरह होता है. अब इस ऐसे से आपको पता चलता है कि द राइटर इज़ मोर ऑफ डिस्क्राइबिंग द फैक्ट, ही इज़ गिविंग द डिटेल्स बाय इन्यूमरेटिंग एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इस टाइप के स्ट्रक्चर को ऐसे को हम बोलते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. डिस्क्रिप्टिव has been derived from describe, to describe something. तो वो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. The million of stars are wandering about in space. स्पेस में मिलियन ऑफ स्टार्स हैं. They are wandering. Now, प्लीज़ टेक नोट कि मैं वर्ड बोल रही हूँ वॉन्डर. दो इसके स्पेल हैं WANDER. स्टिल आप इसको वेंडर नहीं बोलेंगे. दिस इज़ वॉन्डर. सो मिलियंस ऑफ स्टार हैं which are wandering about in space, roaming about. वो स्पेस में मूव कर रहे हैं. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. The movement pattern of the stars. अब सिंस आपको मालूम है कि आपके synonyms भी आने हैं, तो आपने इन वर्ड्स को उनकी अलग से मीनिंग्स जो हैं आप उनको एक पेज पे राइट डाउन करते जाइए ताकि आपके माइंड में वो जगह बना सकें. You need to jot down all the points. Then, and the travel through a universe so immense. Underline the word immense का मतलब है बहुत बड़ी, huge. That it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near another. इतने ज़्यादा फासले पर हैं कि this is very rare, this is less likely कि कोई स्टार जो है किसी दूसरे स्टार के नज़दीक पहुंच जाए. एम्फेसिस किस चीज़ पे हो रहा है बार बार? यूनिवर्स के ग्रैंडर पे, उसके इमेंस होने पे, उन डिस्टेंसेस के ज़्यादा होने पे. फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस. वॉयज एक सफ़र, उसका जो ट्रेवल है वो बिल्कुल तन्हाई में करते हैं क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ी है. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन. एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसने अपनी बात क्लियर की है. ऐसे ही जैसे आप किसी ओशन में एक एम्प्टी शिप रखते हैं. सो इट्स अ मेटाफर, एक एग्जाम्पल है जो उसने प्रेजेंट की है. In a scale model in which the stars are the ship, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbors. एक स्केल मॉडल जो है अगर आप बनाते हैं शिप का तो उसमें आप अंदाज़ा करेंगे कि आप अपने नियरेस्ट नेबर्स के से भी वो करीबन 1,000,000 माइल के डिस्टेंस पर होगा. From this, it is very easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि एक स्टार को दूसरा स्टार अपने नज़दीक मुश्किल से क्यों मिलता है. सेल्डम, लेस लाइकली, हार्डली, रेयर, लेस ऑफन. ठीक है. सो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टार टू फाइंड अनदर स्टार नियर इट, so you should think that you are in better position to answer the question. We believe, however, that some 2,000 million years ago this rare event took place. अब वो हिस्ट्री की तरफ जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है आपको, टाइम ट्रैवल करवा रहा है राइटर आपको कि 2000 साल पहले का ये वाक्य है. एंड दैट अनदर स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस हैपन टू कम नियर द सन. कि एक और स्टार जो स्पेस में ब्लाइंडली मूव कर रहा है, हैपहैज़र्डली मूव कर रहा है, लाइक उसका कोई डिफाइंड पैथ नहीं है, कोई ट्रेजेक्ट्री उसकी जो है वो नोन नहीं है. हैपन टू कम नियर द सन, ऐसा हुआ होगा कि वो सूरज के नज़दीक आया होगा. अब ऐसे का जो राइटिंग स्टाइल है उससे आपको पता चलता है कि नाउ हियर ही इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग द फैक्ट, ही इज़ गिविंग सपोजिशंस. ऐसा हुआ होगा, ये आपको कैसे पता चलता है? हैपन टू कम, कैसा हुआ होगा. Just as the sun and moon raise ties on the earth, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज और चांद ज़मीन पर टाइज बनाते हैं, ज़मीन पर वेव्स बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी एक सर्टन ग्रेविटेशनल पुल होती है जिससे वो चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो अर्थ पे टाइड्स बनाते हैं. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. तो इस स्टार ने
सूरज की सरफेस पर भी यकीनी तौर पर टाइड्स बनाई होंगी। आपको टाइडल पुल का मेरा ख्याल है अंदाज़ा होगा कि आपने अक्सर ये फिनोमिना सुना होगा, मद्दो जज़र का सुना होगा कि जब ओशन पर